Comrade, it is a live, comrade. Okay. Hello. Yes. Hello. Yes. Hello, everyone from Center of Union. In the wake of 26 November general strike, CITU has organized a panel discussion on different issues of masses. Today is the subject is on public sector units. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की तरफ से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और आने वाले 26 नवंबर की आम हड़ताल के उपलक्ष्य में सीआईटीयू ने जनता तक सीआईटीयू ने 26 नवंबर की हड़ताल जिसके बारे में और जिसके मुद्दों और डिमांड्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा आम जनता तक बात पहुंच सके, इस चीज को लेकर पैनल डिस्कशन जो कि जनता के अलग अलग मुद्दों के ऊपर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आज का जो पैनल डिस्कशन है वो सार्वजनिक उपक्रम के निकायों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऊपर है। जी हेलो जी हेलो जी उनका मैं परिचय आपको दे दूं। उनका नाम है कॉमरेड ललित मिश्रा, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं स्टील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से। मैं गुजारिश करूंगी कॉमरेड ललित मिश्रा जी से कि वो अपनी बात रखें और आपका समय और सभी पैनलिस्ट का समय होगा 15 मिनट। जी कॉमरेड अपनी बात रखिए। जी स्टील सेक्टर की ओर से सभी को इस पैनल डिस्कशन में स्वागत है। आई डोंट नो वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। कॉमरेड नरेंद्र राव जी। Yes, comrade. Okay. We can hear you, comrade. Yes. Abhimanyu ji and Comrade Surendra ji, all of us senior comrades, and from CITU Center Neha ji. अभी हम लोग सभी बिजी है। हमारा 26 का जो स्ट्राइक एक्शन है, जन स्ट्राइक एंड थ्रू आउट इंडिया। हम सब जानते हैं कि हमारा 7 पॉइंट डिमांड है, कॉमन डिमांड्स, और बाकी इंडस्ट्री वाइज कुछ डिमांड भी है। जैसे हम लोग स्टील इंडस्ट्री में हमारा वेज नेगोशिएशन नहीं हो रहा है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का हमारा एक्सपोजर ज्यादा है। हम जब काम करते हैं तो एक्सपोजर ज्यादा मतलब कोविड का इन्फेक्शन का चांसेस भी ज्यादा है, तो उसमें मौत भी हो रही है, तो उसमें कॉम्पेंसेशन का डिमांड है। और हम सभी जानते हैं हमारा जिस तरह का इंडस्ट्री है उसमें मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विदाउट मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन यू कैन नॉट सर्वाइव, जस्ट नेचुरल डेथ हो जाएगा। तो मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन का भी डिमांड है। तो ये सब डिमांड लेके हम लोग स्ट्राइक पे आ रहे हैं। देखिए फ्रॉम माइंस दैट इज फ्रॉम किरुगुरु मेघातबुरु टू आवर कलकत्ता सीएमओ हेड ऑफिस। तो यहाँ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ पोटेंशियल ये नहीं है, ये नहीं हो सकता है। हमारा कंट्री जैसा है ऐसे डाइवर्सिफाइड सिचुएशन है हर एक यूनिट में, माइंस में, डिफरेंट ऑफिस में। लेकिन फिर भी बहुत दिनों से हमारा स्टील फेडरेशन एंड CITU हम लोग इस कोशिश में है कि जब CITU का कॉल आएगा तब एकदम यूनिफाइडली हम लोग उसमें शामिल होंगे। और ये जो कॉल आया है अभी 26 हमारा नवंबर का स्ट्राइक एक्शन का, तो उसमें तो उसको लेकर तो हम लोग पिछले 30 इयर्स से हम लोग फाइट कर रहे हैं कि हमारा ऊपर अटैक मतलब डायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट का अटैक बहुत पुराना है। फर्स्ट टाइम ये ऐसा आया था कि हमको लॉन्ग और फ्लैट दोनों प्रोडक्ट की प्रोडक्ट में डिवाइड किया जाएगा, लॉन्ग प्रोडक्ट एंड फ्लैट प्रोडक्ट, और उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सो ये 90 से चल रहा है। उसके बाद हमारा जो इसको स्टील प्लांट बहुत पुराना स्टील प्लांट है, अभी ISP का नाम पे सभी जानते हैं बानपुर में। तो उसको इसमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब सब कुछ ठीक हो गया था। हमारा स्टेट गवर्नमेंट में उस टाइम लेफ्ट हमारा गवर्नमेंट था, लेफ्ट पार्टीज का, तो वो लोग कोशिश किए थे। फिर हम लोग एक फेडरेशन की ओर से थ्रू आउट इंडिया, और हम लोग स्ट्राइक भी किए थे उस टाइम, थ्रू आउट स्टील इंडस्ट्री हम लोग स्ट्राइक भी किए थे, और ऑलमोस्ट 20 इयर्स हम लोग फाइट किए।
टू सेव इसको हम लोग 20 इयर्स फाइट के हमारा जो छोटा मूवमेंट, उस मूवमेंट को एक कॉमन पीपल का मूवमेंट, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन में हम लोग लेके गए थे। स्टील इंडस्ट्री का हर एक जगह में जितना है कॉमन पीपल उसके साथ जुड़ गए थे। और उसके बाद अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट अब मान लीजिए 20,000 करोड़, इट इज नियर अबाउट 20,000 करोड़ जो पूंजी यहाँ इन्वेस्ट हुआ है। इट इज ड्यूटी ऑफ स्ट्रगल ऑफ CI2 एंड स्ट्रगल ऑफ फेडरेशन थ्रू आउट द स्टील इंडस्ट्री। उसके बाद पकड़ लीजिए अभी जो चल रहा है पिछले 4 साल से इन द नेम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अभी हमारा सेलम, हमारा VISL, हमारा एलो स्टील प्लांट को डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। देखिए अभी जो इंडस्ट्री का सिचुएशन है, पहले एक जमाना में एक तो फंड रहा करता था कि हमारा मॉडर्नाइजेशन एक्सटेंशन में गवर्नमेंट का कुछ सपोर्ट होता था, लेकिन पिछले 15 साल से ये सब नहीं है। फॉर मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन हमारा अपना फंड है, सेव का अपना फंड, मतलब हम जैसे प्रोडक्शन करते हैं, जैसे प्रॉफिट करते हैं, एक तो पार्ट उसी हिसाब से रखा जाता है कि एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस मॉडर्नाइजेशन एक्सपेंशन में ये मतलब इन्वेस्ट होगा। तो अभी प्लान हम लोग कर रहे हैं, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए 8 मिलियन टन का प्लान रेडी है, लेकिन अप्रूवल गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। सेलम का क्या चाहिए? सेलम का तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया है, सेलम का साथ पूरा स्टेट है, ऑल द पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टिंग दिस मूवमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन इन सेलम। तो उसमें बस व्हाट सेलम एट दिस पॉइंट नीड्स इज अ पावर प्लांट, और सेल जो कि 55,000 करोड़ का टर्नओवर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सेल का टर्नओवर है 55,000 करोड़, तो उसमें एक पावर प्लांट कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चाहिए वो है गवर्नमेंट का अप्रूवल, और गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। एलो स्टील के लिए, VISL के लिए सेम थिंग है। ये जो प्लान हम लोग कर रहे हैं रांची में बैठ के, कॉर्पोरेट में बैठ के, लेकिन उसका अप्रूवल गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। बस उनका एक ही काम है, जैसे भी हो इसको बेच डालेंगे। तो इसलिए 26 नवंबर में हमारा जो मूवमेंट है टू सेव इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर को ये लोग एकदम डिसीजन ले लिए है कि इंडियन पॉलिटिकल मैप से डिलीट कर देंगे। तो उसका अगेंस्ट में हमारा ये मूवमेंट, और हम पहले भी जैसे भाईजाग में ये लोग कोशिश किए थे प्राइवेटाइजेशन करने का, ये जो गंगावरम हमारा बीच में, वो उस बीच में बहुत सारे आदमी और स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर वो भी बोले थे कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। तो इस तरह का मूवमेंट स्टील इंडस्ट्री में पिछले 20-25 साल से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं, और आज तक हमारा एक भी यूनिट को हम लोग का प्राइवेटाइजेशन नहीं होने दी। मतलब प्राइवेटाइजेशन अगेंस्ट में हमारा स्ट्रगल जो है उसमें एक तो रिजल्ट है, जैसे हमने कहा कि भाईजाग में होने नहीं दिया, और हम लोग ISP में एक ही स्ट्रगल किए पिछले 20 साल से। और जो मूवमेंट है, सॉरी आप और जो मूवमेंट है इस तरह का हम लोग मूवमेंट किए कि एक भी यूनिट को प्राइवेटाइजेशन होने नहीं दिए। लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट पीछे पड़ गया हर एक पब्लिक सेक्टर को, जैसे हम लोग डिस्कशन किए थे, जैसे कोल का स्ट्राइक हुआ था 2nd, 3rd and 4th जुलाई, उसका पहले जून में भी हमारा वाइजैक स्टील प्लांट में 2 दिन का स्ट्राइक रहा। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और वाइजैक स्टील प्लांट गोइंग फॉर स्ट्राइक फॉर जस्ट कंसेक्यूटिव 2 days एंड द स्ट्राइक वाज टोटल। गवर्नमेंट का सर्कुलर था वर्क फ्रॉम होम, अल्टीमेटली आफ्टर 54 days गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन दैट सर्कुलर। तो अभी भी वाइजैक स्टील प्लांट का जितना कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का है उसको जस्ट बस 15 days का सैलरी मिलता है। वर्क फ्रॉम होम तो बस सर्कुलर रह गया, अभी 15 days का सैलरी मिलता है। इसलिए वाइजैक स्टील प्लांट का परमानेंट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर सोच रहे हैं कि आफ्टर जो स्ट्राइक ऑफ 26 नवंबर हो सकता है इंडेफिनिट स्ट्राइक में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हर एक यूनिट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जो पोजीशन है तो उनका ऊपर जुल्म और बढ़ते जा रहा है। अभी 30% अभी बजटरी प्रोविजन जो है 30% ये लोग डाउन कर दिए हैं हर एक यूनिट में। ऐसा नहीं है, जहां 26 days का जॉब था अभी 22 days का वो लोग जॉब दे रहे हैं हर एक यूनिट में। तो अभी जो पहले बहुत सारे फैसिलिटीज था उसको भी खत्म कर दिए हैं। जैसे हमारा विराज स्टील प्लांट में वो लोग जितना फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर के रूप में काम कर रहे थे हॉस्पिटल में, उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा था। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग मूव किए, कंटिन्यूअस 3 days मूव किए, डेपुटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ। बोकारो में, सेलम में, हर जगह में हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। सेलम में इन द मीन टाइम हम लोग 19, 20 and 21 September 3 days कंटिन्यूअस स्ट्राइक किया, एंड दैट वाज आल्सो ए टोटल स्ट्राइक। कोविड का कंपेंसेशन लिए हम लोग मूवमेंट किए। इसलिए हर एक जगह में यूनिट में हम लोग पिछले 5-6 महीना में कंटिन्यूअस
स्ट्रगल में रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये 26 हमारा जो जनरल स्ट्राइक का डेट है उसमें स्टील इंडस्ट्री एक ऐसे जगह में हम लोग पहुंच जाएंगे जहां हम लोग कह पाएंगे कि हमारा स्टील इंडस्ट्री में अगर आप लोग प्राइवेटाइजेशन करने का कोशिश करेंगे थ्रू डिफरेंट नेम, थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और अदर थिंग्स, तो हम लोग इसको होने नहीं देंगे। जैसे पहले बहुत बार हम लोग कामयाब हो चुके हैं अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, हमारा मूवमेंट एक जगह में लाके हम लोग उसको रोक पाए थे। हमारा जितना पब्लिक सेक्टर मतलब स्टील जो है, स्टील को हम लोग प्रोटेक्ट किए थे गवर्नमेंट का कॉन्स्पिरेसी। तो इस बार भी गवर्नमेंट का जो कॉन्स्पिरेसी है थ्रूआउट डिफरेंट पब्लिक सेक्टर एंड सेल ऑल्सो, तो हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग हर एक यूनिट में और पर्टिकुलरली शॉप फ्लोर में, देखिए सीआईटीयू का इस बार स्लोगन है स्ट्राइक शुड बी विजिबल, मिलिटेंट एंड इफेक्टिव। तो ये इफेक्टिव, विजिबल एंड मिलिटेंट बनाने के लिए जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है कि शॉप फ्लोर में रीच टू अनरीच का जो स्लोगन है सीआईटीयू का, उसको लेकर हम लोग को जाना चाहिए और उसी हिसाब से हम लोग शॉप फ्लोर में कोशिश कर रहे हैं मैन टू मैन कॉन्टैक्ट करने का। देखिए पॉलिसी क्या है, तो ये जो पॉलिसी रहेगा, तो अभी अभी आज कह रहे थे, आपको कहना बहुत जरूरी है, आज कह रहे थे शायद कुछ टाइम बाकी है नेहा जी, हम कह सकते हैं? मैं कंटिन्यू? यस यस ओके 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 2-3 मिनट। जैसे आज भी डिस्कशन हो रहा था कि रेल में पिछले 10 साल में कोई स्ट्राइक हुआ है? रेल का इंडियन जो है, रेल का एम्प्लॉय है, स्ट्राइक किए थे? ऐसा तो नहीं है रेल खाली रेल का एम्प्लॉय है उनके लिए, ऐसा नहीं है। कोयला केवल मतलब कोयला का जो एम्प्लॉय है, कोयला में काम करता है खादान में, उनके लिए ऐसा तो नहीं है। इस सब ना कंट्री का है, हमारा देश का है। इसलिए रेल पिछले 10 साल में बड़ा कोई मूवमेंट नहीं किया है, तो मूवमेंट नहीं करने से आप लोग बात जाएंगे ऐसा कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट ठान लिए है कि हम जो रेल का प्रोडक्शन यूनिट है, हम कह रहे थे कि मोदी जी बनारस कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत कर आए हैं और उस साइड में डीएलडब्ल्यू डीजल लोकोमोटिव हुआ, एक जमाने हम वहां गए थे देखने के लिए, इतना बढ़िया प्लांट है। 2015 में गवर्नमेंट ने कहा कि 215 हमारा इंजन हमको प्रोड्यूस करके दीजिए, तो दैट ईयर इन 2015 दे प्रोड्यूस 213 नंबर ऑफ डीजल इंजन एंड दे गॉट एक्सीलेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये सब जितना प्रोडक्शन यूनिट है हमारा रेल का, वो जनरल इलेक्ट्रिक और एल्स्टॉम को लोग दे देंगे, कितना रेल लाइन दे देंगे और रेल स्टेशन दे देंगे, सब ये लोग तैयार कर लिए। तो गवर्नमेंट जब तैयार करती है कि हम पूरा जो पब्लिक सेक्टर है उसको बेच डालेंगे, तो हम जितना पब्लिक सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, वो परमानेंट हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो सकता है। तो ये कंटिन्यूअस कैंपेन में हम लोग है पिछले 2 महीना से, और आगे 1 वीक जस्ट बाकी है, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे हर एक का पास पहुंचने के लिए कि किसी भी हालत में हम स्टील में प्राइवेटाइजेशन को रोकेंगे। और दूसरा जितना प्राइवेटाइजेशन माने हमारा पब्लिक सेक्टर है उसमें भी एक तरह का कैंपेन चल रहा है, हम जरूर कामयाब होंगे इसी उम्मीद के साथ। हमारा स्टील का जितना छोटा मोटा मूवमेंट है उसको हम नैरेट करने की कोशिश करें। थैंक यू मैडम जी। शुक्रिया कॉमरेड ललित मिश्रा जी, आपने बहुत कम समय में हमें आपके स्पेसिफिक सेक्टर जो है स्टील का सेक्टर, उसकी स्पेसिफिक डिमांड्स के बारे में बताया, कैसे उनके लगातार आंदोलन की वजह से जो है आप लोग अपनी डिमांड्स और रेसिस्ट कर पाए हैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में। तो अब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूंगी कॉमरेड नरेंद्र राव जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। आई रिक्वेस्ट कॉमरेड नरेंद्र राव टू स्पीक ऑन द इशू and your time is 15 minutes. Okay. Please, comrade. Yes, I think that I am audible for all of you. Yes, yes. Okay, thank you. Comrades, first of all, I would like to thank for all the comrades who have this panel of discussion arrangement. Senior leaders from Steel, from BSNL, and other comrades are there. It is a good opportunity to the respective federations and the respective industries to explain to others what are the developments taking place and what are the arrangements these trade unions or federations are making to successfully raise the countrywide strike to be taking place on 26th.
that is this month. Comrades, so far as major ports are concerned, shipping and water transport. Generally, water transport means nobody cannot immediately understand what is a water transport. Water transport means major ports, shipping, harbor, and all these consisting of the water transport. Mainly major ports. You are aware, and you could have seen the India map. It is just like a triangle. In the eastern coast, there are 6 major ports, and in the western coast, there are 6 major ports. Major ports are the lifeline of the safety and security of the country, because these ports are in the water area. There are 4 sides. East, that is also water. West, that is also water. And south, only in the north there is a Himalaya. So in all the major ports, more than 1 lakh organized and unorganized workers are there. In major ports, there are only 5 major port workers federations are there. Number 1 federation is HMS. Number 2 is also a fraction group of HMS. And number 3, we, the CITU, Water Transport Workers Federation. Another one is INTUC and EI. Only 5 federations are there. These federations are recognized by the government of India. Almost all of us are under this federation. Each federation got their own affiliated unions in all these major ports. For example, water transport is very strong in Calcutta, Paradip, and Visakhapatnam, Chennai, Turin Port, PT, etc. So in the major 5 port workers federation, we are having the National Co-Ordination Committee. The National Co-Ordination Committee of Major Workers Federation we are having during this pandemic period. During this lockdown period, we used to meet often. We discuss what is the problem in the major ports, and we also regularly touch with our affiliate union. Comrades, meanwhile, immediately after the call of the 10 central trade unions on the Gandhi Jayanti day, that is October 2nd, the nationwide call for one day strike has been given, and we immediately saw what are the 7 charter of demands, that is 7 demands of the annexure of the strike notice to be served. And we explained to our worker that all the 10 central trade unions have taken very serious concern about the patent doctrine also, because the 7th demand in the 10 central trade union joint annexure is protect the vote, along with other public sector, that is major ports. Meanwhile, we have explained our workers on the last day of the parliament session held in the month of September, the Major Port Trust Act was repealed and introduced a new act called Major Port Authorities Bill. So the major ports are the autonomous body. We are covered under the exclusively an act called Major Port Trust Act. Now, government wanted to remove the Major Port Trust Act and they wanted to introduce the Major Port Authorities Bill. The Major Port Trust Act is 1963. Now it is a Major Port Authority Bill 2020. What is the difference between the two bills? What is the necessity to bring this new act to control the major ports in the country? I would like to highlight only 2 points. We have made a campaign among the grassroots level. Our federation prepared a leaflet in English from the Federation Center. We have circulated to our National Coordination Committee of all major port and dock workers federation,
and that was taken at the grassroots level. What is now in the Major Port Trust Act? There is a clause. Each and every individual port is crores of rupees as their reserve fund. That is their profit earned so far. This money will be deposited only in the nationalized bank, according to the existing MPT Act. But the new bill, which is introduced and already passed in the Lok Sabha and awaiting to be passed in the Rajya Sabha during the winter, says the money can be deposited in any scheduled bank. What is the difference between the scheduled bank and nationalized bank? Nationalized bank is a bank owned by Government of India. Scheduled bank means just mingling the banks along with nationalized bank. For example, Axis Bank, HDFC Bank, and other Yes Bank, all these banks, ICICI Bank will be considered as a scheduled bank. That is number one. Number two, comrade, country is having huge lands and buildings, including the public sector. That way, BSNL and all other public sector is having a huge lands and its own. As major ports is also having a large number of lands. Now I will tell you an example. If anyone have visited the Bombay, before the Bombay Train Drive, the Taj Hotel, the Taj Hotel building is there. The building is owned by Taj Hotel, but the land is only Bombay Port Trust. If you divide the Bombay, that is Bombay city, as a eight part, one part of the Bombay city is owned by the Bombay Port Trust. So, telling an example like that, each and every ports in the country is having a huge, vast land. Now, according to the existing MPT Act, this land cannot be sold other than it can be given a long-term lease, 33 years lease or 99 years lease, etc. But the new act, the land can be sold to any individual. That is the second thing. Third thing, in the MPT Act, the act says if the port wanted to develop, if want to have some additional capital, it can go for a loan from the state government, central government, or national bank. That is the existing act. What the new act says, if the port wanted to develop, it can go for additional capital from any individual living in India or living in abroad. So when we have pointed out all these to the Parliamentary Standing Committee on Travel, Tourism and Culture, the Parliamentary Committee has given direction. This is the backdoor entry of privatization of major ports in the country. So the Parliamentary Committee itself has given its ruling that it is backdoor entry of the privatization. So all these issues we have made due to this, to make the success of the All India strike, we have prepared a leaflet that was translated in all the regional languages, and our affiliate unions have taken at the grassroots level. So the National Coordination Committee of all federations, including HMS, IN2Z, AI2Z, we have conducted the meeting online, like our panel of discussion, which we are doing online on 4th of this month, 4th November. Immediately, we have instructed all of our affiliated unions. Accordingly, our affiliated unions all the notice at all the major ports on 11th. The Central Trade Union has directed us to serve the strike notice on 10th, but we took a decision to serve on 11th. Accordingly, all our affiliates have already the strike notice. The 7th charter of demand already decided by our central trade unions. It is also annexed. Along with that, some of the industry-based issues have been given an annexure. So we have been continuously making all the arrangements. We have issued a pamphlet, we have issued a booklet, we have advised our affiliates to go to the shop level, section level, to reach the unreached. Each and every worker should realize what would be the impact if the new bill comes into an act. So that this is an extraordinary and this is a very, very good opportunity. Unless and until we in the nationwide strike, we will be losing
our trade union, that is the existence of our trade union and the existence of the port, everything will be challenging. And finally, I would like to say, if the major ports are privatized, the national safety and security will be compromised. How? In the major port, there are naval bases are there, navy bases are there in Kochi, in Goa, in Bombay, other port, Visakhapatnam. There is a naval base. All these naval bases are in the waterfront area. If immediately after implementation of act is come into existence, it would be gradually privatized. Then if the major ports has gone to privatized hands, our safety and security and the secrecy of our naval forces will be sold out to any private company. Name itself will be a stake. This aspect is also explained before the parliamentary standing committee. Parliamentary standing committee also agreed, and they have acknowledged, they have also given the suggestion to the ministry that this clause has to be removed. What are the private participation? The clauses have to be discussed with comrades. Now what we feel, the field is very fine. The field, the ground level, the workers are very much in the agitative mood. Definitely we hope and we assure our central trade union leaders on behalf of the Water Transport Workers Federation, the entire major ports in the country will be going on a strike on 26 November, according to the call of Central Trade Union, 10 Central Trade Union leaders. This time, the field, the ground is very much ripe. This time, people are very much agitated mood, particularly in the context of the latest parliament session. Before one day, that is after one day, three agriculture laborers act was passed, and the next day it was also passed. So this mood of the worker is very much ripe. I once again, before concluding, assure all the comrades who have participated here and our central trade union leader and CIT center and CITs, this time the port and dock workers strike total. The strike will be very excellent. All other people are also very much cooperative with us, particularly the HMS, INTUC and AITUC. So this much I would like to brief before the other panel comrades also. I would like to thank for having given me this opportunity. Thank you, comrades. Thank you, Comrade T.Narendra Rao, for letting us know about the water transport situation and especially the major port authority bill to 2020, which has been pushing by the government to, as you have said, ki it's a way of backdoor entry of the privatization. So I thank you on behalf of everyone. Now I request Comrade P.Abhimanyu, who is General Secretary of BSNL Employees Union, to kindly speak on the topic. Please, Comrade. Yes. Comrade, hello, Comrade Abhimanyu. Hello, Comrade. Comrade, we can't hear you. Hello. Hello. No, we can't hear you. Hello. Comrade Abhimanyu, we are not audible. Nothing. No sound is there.
check up whether you have on your mic. Mic. I think mic is on. Comrade, kindly, could you? No, now you switch it off. Switch off the mic. Now it is on. Yes. Hello. No, Comrade Abhimanyu is not audible. हेलो कॉमरेड, एक बार आप अपना हैंडसेट जो है ना, एक बार उसे दोबारा से निकाल कर ट्राई कीजिए, दोबारा से अटैच करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी, हेलो 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 अभिमन्यु जी, नेहा जी ने ठीक कहा, दोबारा कोशिश कीजिए, ठीक हो जाएगा, ऐसा होता है। हाँ, वो आपका जो हैंडसेट है ना, हैंडसेट, उसे दोबारा अटैच, जो आपका हेडसेट है ना, सॉरी हेडसेट, उसे अटैच करके देखिए एक बार और निकाल के। Next time. Okay, Comrade, ask our Banerjee NTPC, then he will come. Okay. Yes. Hello, Comrade. Banerjee, जी कॉमरेड। कॉमरेड अभिमन्यु का थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उनसे दोबारा कोशिश कर रहे हैं उनके साथ जुड़ने की। तो इस बीच में मैं गुजारिश करूंगी कॉमरेड SN बैनर्जी जिसे कि वो अपनी बात रखें। कॉमरेड SN बैनर्जी जो कि कन्वीनर हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पब्लिक सेक्टर ट्रेड यूनियंस के, मैं गुजारिश करूंगी कॉमरेड बैनर्जी से कि वो अपनी बात रखें। कॉमरेड बैनर्जी, आप सुन पा रहे हैं? Am I audible? Yes, comrade. Yes, comrade. Thank you, Comrade Neha, Comrade जी. Clint, and Comrade Joy, those who are behind this. The opportunity has been given to the public sectors, concerned public sectors online meeting, a panel discussion. And Comrade Lalit Mohan, Comrade Narendra, Comrade Abhimanyu, those who are present today in panel discussion. I am from NTPC. This is the power project. Whenever we discussed about power project, although NTPC is a significant name in the central public sector in power plant, power project, but in India, till now, the state power sector is a major part of the generation, distribution, transmission, in all along. They are having a major part. We know very well in 2004, the state electricity board has been bifurcated. 2004 electricity bill, under which this was bifurcated in 3: generation, distribution, and transmission. Again in 2020, there is another electricity bill where the distribution system, those is being privatized, and government is trying to bring this from discoms to several franchise and sub-vendors, as today's in cable TV connection, as that. And that impact will not only this impact will the employees of the distribution system or state electricity board employee, but it will directly affect the consumers also. Now, if you in against this, there is a big movement in UP. You have seen that all trade unions, irrespective of the political affiliation,
they got a big movement, and government has decision has been उसको वापस लेना पड़ा अभी उस आंदोलन से. But as far as NTPC is concerned, the NTPC government of India in 1975 at the regime of the Congress government, the NTPC has been established for the generation and transmission. After that, this has also been bifurcated. Transmission has been bifurcated, and it has been given to the PGCL, Power Grid Corporation Limited, and NTPC is only for generation company. And it's a Maharatna company. In May 2010, Maharatna company, it has been declared among the 10 Maharatna companies, it is the number 2 Maharatna company in NTPC. Its installed capacity is now 62,918 megawatt. It's a 24 coal-based project, 7 gas-based, 1 hydro, 1 wind, 12 solar projects, and 15.5% of total installed capacity of India, it contributes. 100 megawatt अगर installed capacity होता है, तो उसका 15.5% installed capacity NTPC का ही है. और हमने जो पावर जनरेट करते हैं, ये है टोटल इंडिया का. हेलो, टोटल इंडिया का पावर जनरेशन जो होते हैं, उसका 22% शेयर Who is speaking? Hello, am I audible? Hello, हेलो. यस कॉमरेड, हमें सुनाई दे रहा है जी कॉमरेड. audible. जी. तो 22% जनरेशन NTPC आज के दिन में कर, अगर 100 मेगावाट विद्युत जनरेट होता है तो 22 मेगावाट विद्युत NTPC की होते हैं. दिस इज हाई एफिशिएंसी NTPC. बट इंस्टेड ऑफ दैट, in various routes, government share has been sold since 2004 from Congress regime. And 1991 the new liberal policy आया है. उसका बाद 2004 में फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफर का नाम में 5% शेयर जो उसमें उन्होंने बाजार में मार्केट में छोड़ा है. उसका बाद वन आफ्टर वन इन डिफरेंट फॉर्म, इन OFS, इन डिसइन्वेस्टमेंट, शेयर सेलिंग, सब करके आज के दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NTPC का ओनली 54.14% इज होल्डिंग. लास्ट ईयर बजट सेशन में निर्मला सीतारामन वाज अनाउंस्ड दैट 10% शेयर ऑफ NTPC will be disinvested, and that means the NTPC share will be come down. The government holding will be come down to 44.1%. As it is a private company, it will be a private company. Then whenever it has been decided, there have been so many agitations in NTPC, particularly the Executive Association, NEFI, and the CI2, and then government was silent about that for a time being. वो लोग ने जो किया है, इसमें साइलेंट होने का बाद लास्ट नवंबर 2002 में, दिस महीना में NTPC गवर्नमेंट ने NTPC को शेयर बाईबैक करने में बाउंड किया है. NTPC शेयर बाईबैक करने का बाद 2225 करोड़ रुपए गवर्नमेंट फंड में इसको देना पड़ा शेयर बाईबैक करने. एंड now the government is talking about that they will not build any thermal power plant because of environmental rate. At the same time, they are bounding the NTPC to purchase the old plant of various state governments, which is not running very well, to the soldier of the NTPC, like Novinagar Power Generation Company, Kati Bijli
Utpadan Nigam. That's all. Again, NTPC has been bound to buy government share of 74.4% of THDC, amounting to rupees 7,500 crores, and also buy 100% government stake on NIPCO, जिसका बारे में हम लोगों का कोई एनटीपीसी का एक्सपीरियंस नहीं है हाइड्रो का बारे में. एनटीपीसी इज एक्सपीरियंस ओनली is in thermal plant. They are the master, but government bound to buy to buy by NTPC 100% government stake in NIPCO for rupees 4,000 crores rupees. Now government is decided to public sector, every public sector they are talking that your capex, capital expenditure has to be doubled, has to be made doubled, and it will be expended very quickly. And your dividend we are paying public sector, but NTPC also, we are 30% we are paying dividend. Day after day, day before tomorrow, day before yesterday, there is a publication that Government of India has instructed to public sector, all central public sector, your dividend has to be more than 30%, and it is to be paid quarterly. But there is not without any audit. Final audit, it will be held in after 31st March. But प्राइमरी ऑडिट का ऊपर तुमने क्वार्टरली डिविडेंड उसको पेमेंट करना पड़ेगा, और डिविडेंड इज टू बी पेड इन 30% मोर देन दैट. Regarding to 26th strike, these issues along with NTPC employees issue has been come into propaganda, and we have from the coordination committee series of program we have taken to the plant level. तो स्ट्राइक नोटिस देना, 9th को गेट मीटिंग करना, पंपलेट 2 दफे हमने पंपलेट भेजा इन वेरियस लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली. एंड द एनटीपीसी एम्प्लॉइज को जो इशू है, अटैक ऑन प्रमोशन पॉलिसी, अटैक ऑन प्रॉफिट शेयरिंग, अटैक ऑन compulsory retired scheme already came in public sector, and in NTPC all on a sudden 6 officers has been forcibly superannuated last 2 months before. And day before yesterday there is one circular in public sector department, जे ऑफिसर्स को DA 31st जून 2021 तक फ्रीज किया जाए, फ्रीज करने का आदेश दे दिया. And 26 November strike is in a bigger impact because of the Modi government before the COVID-19 also, particularly from the demonetization, then GST, then come in COVID-19. And COVID-19 का जो अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने उन्होंने दूसरा तरीका से ले लिया. गवर्नमेंट को जो सपोर्ट देना चाहिए था मास एम्प्लॉय को, मास पब्लिक को, मास वर्कर को, वो सपोर्ट तो नहीं दिया. फिर उन्होंने उसको एक अपॉर्चुनिटी ले लिया, जो उसको पार्लियामेंट में भी उसको वोट नहीं दिया, देने दिया एमपी लोग को. प्रेजेंट बिल, लेबर कोड बिल सब उन्होंने पास करा लिया. As far as, and it's an attack in whole mass workers का, mass people का अगेंस्ट में मोदी गवर्नमेंट में ये अटैक कर रहा है. तो हमने अगर ये सब एक साथ में जुड़ नहीं पा रहा है, अभी तक हमने एनटीपीसी में भी ये सब एक साथ में जुड़ नहीं पा रहा है. ये व्हाट इज द रीजन फॉर सेलिंग द पब्लिक सेक्टर? दिस इज only not the particular issues. This is the issues, main issues for the public sector employees. But the whole policies of the government is the collect the revenue from the public sector, and it will be expended in a different way, not for the public.
and all the efforts has been given. जो सोशल कार्यक्रम होता है CSR का माध्यम से टोटल पब्लिक सेक्टर का ऊपर ही डाल देता है. स्वच्छ भारत बोलो, जो भी बोलो, पब्लिक सेक्टर के ऊपर डाल देते हैं. Now, on the part of the 6th November strike, we have made a series of programs. But one thing, we nothing to hide. Then in NTPC, how many projects? 42 projects are there. But CI2's organizational strength, organizationally, union and membership strength, and ideological strength is not as like as what we would like to see, but that is not there. There is a lacuna in the part of the organization of us. तो उसको भी इसका मध्य चलते हुए हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ में आज का दिन में जितना यूनियन है हमारा CI2 का, हर जगह में हमने नोटिस डाला है, बकाई गेट मीटिंग करके. डिफरेंट लैंग्वेज में हमने 2 दफे पंपलेट भेजा है NTPC का डिमांड लेके, और सब ये स्ट्राइक का जो इश्यूज है उसको जो अटैचमेंट है वो सब लेके. एंड देयर इज ए दुख का बात एक है, जो हमारा उधर जितना सारा दूसरा सारा यूनियन है, those who are part in the centrally in the strike, calling the strike, the INTUC, HMS, even the ATAC, in nowhere they have submitted the strike notice. Only in Farakka, in West Bengal, where we have been able to achieve to compel the INTUC, not only the direct employee, contractor employee also. The 4 unions, direct CI2 INTUC and contractual member CI2 INTUC, 4 unions made a meeting, a convention, and we gave jointly one a strike notice has been given. And yesterday there is a big rally for 4 unions together from township to plant. 2,000 to 2,500 employee workers were there, and there is a huge gate meeting for the success for the success of the 26th November strike. There is a very good achievement at the part of the Farakka union. In other parts, there is a depending upon the organizational strength and ideological consciousness, there is a we are taken the steps to propaganda to reach the every workers in Shalakati, Assam. We have made a very good approach. We reach the every workers in Bihar also. So this is the scenario, and we think that propose in this panel discussion what we request whoever is listening or viewing this panel discussion, the NTPC leaders, I request all of them, 5-6 days is also from today, 5 days is also is there. We should reach every workers. We should strengthen our propaganda for 5 days for success the strike of 26, and we are touching with everyone for the success of the 26th strike. And our appeal to all the workers of NTPC also to go for the strike and help the trade union leaders, those who are working in the plant level. That's all. Thank you very much. शुक्रिया कॉमरेड बैनर्जी, आपने हमें बताया एनटीपीसी के बारे में और फिलहाल जो वहाँ पे हालात हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि जनता में और एनटीपीसी के और लोगों, एम्प्लॉइज और लीडर्स के पास ये बात पहुंचे और 26 तारीख की आम हड़ताल में वो लोग बड़ी संख्या में शामिल हों। अब मैं गुजारिश करूंगी कॉमरेड पी अभिमन्यु से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं BSNL एम्प्लॉइज यूनियन के, कि आप अपनी बात रखें। काइंडली कॉमरेड प्लीज पी अभिमन्यु. कॉमरेड, कैन यू hear me now? Hello? Yes, I am hearing you well. Are you getting my speech? Yes, comrade. Yes. Okay. Comrades,
Very good evening to all the participants and also to the viewers. At the outset, I would like to salute the 10 central trade unions which have strained their every nerve to organize this general strike on 26th November. So far as BSNL is concerned, 8 unions and associations of BSNL are making a full-scale patient to make the general strike a success in BSNL. Comrades, one of the important demands of the general strike on November 26th is to protect the public sector from the onslaughts of the Modi government. Yes, in the earlier regimes also, private disinvestment has been taking place. Now, the attack on the public sector is on an unprecedented level. Maybe the Indian Railways will be privatized within 2-3 years, and I need not go into the detail. It would have been told umpteen times by the comrades. An unprecedented attack has been launched on the Indian public sector, and protecting the Indian public sector from the brutal assault of the Narendra Modi government is one of the key demands of this general strike on 26th November. Now, comrade, we have to make the people understand that the existence of a vibrant public sector in the country is very essential. And it has to be done by the comrades belonging to each and every sector. What is the significance of BSNL from the viewpoint of the customers? Why BSNL should remain as a public sector company, or why there should be a strong, vibrant public sector company in the telecommunication sector? This we have to convince the people. Now, all of you are aware that Mukesh Ambani has entered into the telecommunication sector. The day on which Mukesh Ambani opened his shop in the telecommunication sector, the entire scenario has changed. For the first time, we are hearing a phrase, unlimited free voice call. You speak as much time as you can. You need not have to pay anything. Unlimited free voice call. People are very happy. Only because of Jio, this unlimited free voice call has come. And then data we are using. Even for this video conferencing, we are using data. And what was the price of data? It was around 300 rupees per GB a few years back. Now a very big competition is going on because Mukesh Ambani started providing data service at a dirt cheap rate. 1 GB free data per day. So other companies are also started giving 1 GB free data per day. Then Jio gave 2 GB free data, 3 GB, even 5 GB free data are being given. Indian customers are enjoying. Telecommunication service has become so cheap, and all this is because of the great Mukesh Ambani, Reliance Jio. But comrade, the general public, maybe they are not understanding that Mukesh Ambani is providing dirt cheap data, unlimited free voice call, not to make the general public happy, but only to close down the shops of its competitors. Earlier, 15 telecom service providers were there. You heard many names. Tata Teleservices, Reliance Infocom, Chotabai, Anil Ambani ka. Reliance Infocom, Videocon, Aircel, Telenor, all the fellows have closed down their shop now. Now only 4 companies are left out. One is Jio, second is Airtel, third is Vodafone India, and fourth is BSNL.
Now among the four companies, Vodafone India is almost gone. It is finished. In the month of July, 37 lakh customers have left Vodafone India. People are migrating to other Jio, etc. So very soon Vodafone Idea is going to be closed down. Airtel is also running into loss. I do not know whether Airtel will survive or not. So comrade, if Airtel is also gone and if BSNL is also finished, then Mukesh Ambani alone will be there. Reliance Jio alone will be there. And at that point of time, Mukesh Ambani will show his real face to the public of this country. You will not get unlimited free voice call. You will not get 1 GB data per day. The prices of voice call and the price of data will skyrocket. He will loot the people. So, with the view to close down the shops of its competitors, Mukesh Ambani is giving unlimited free voice call. Comrade, we have to make the people of this country understand that so long as BSNL survives as a public sector company, that alone is the guarantee that Mukesh Ambani cannot loot the people. To save the people of this country from the looting of Mukesh Ambani, BSNL has to remain as a strong, vibrant public sector company. Okay. Now, what is the condition of BSNL? Because time is very limited. What is the condition of BSNL? Maybe 1 or 2 months back, there is one very notorious MP of BJP MP from Karnataka, one Anantakumar Hegde. He made a statement. Narendra Modi has given technology to BSNL. He has already given 4G. Narendra Modi has given 70,000 crore rupees to BSNL and MTNL. But in spite of all these, BSNL has not improved because the BSNL employees are not working. They are always fighting against the government because they are traitors. They are traitors. They are Deshdrohis. This is the statement of not only Anantakumar Hegde, but this is what the government is going to tell to the people of this country if BSNL fails. What actually has happened? Comrade, in the year 2017, 18, 19, BSNL employees have conducted heroic struggles, many strikes, demanding 4G spectrum because all the private operators have already started 4G service. BSNL could not start because BSNL did not get 4G spectrum. You know, BSNL is a government company. It is 100% owned by Government of India. Government of India is the owner of BSNL. So it is the duty of Government of India to provide 4G spectrum to BSNL. This was our demand. And we went on struggle 17, 18, 19. And ultimately, the government was compelled to announce that it is allotting 4G spectrum to BSNL. Comrades, this announcement was made 1 year back. And still today, this announcement remains on paper. BSNL could not start its 4G service because only with spectrum you cannot start the service. You have to have equipments. So BSNL floated a tender. In March, BSNL floated a tender to procure 4G equipments. What happened? Immediately, Government of India, Modi government told BSNL, you cancel this tender. Because there were complaints. Indian telecom manufacturers could not participate, could not bid in the tender because the tender conditions are such that Indian manufacturers cannot make bidding. This was the complaint, and based on that, our tender was cancelled. And thereafter, it is already 5 months. Even after 5 months of cancellation of our tender, Modi Sarkar is not able to tell BSNL
which Indian manufacturer is capable of supplying 4G equipments to BSNL? It is already 5 months. In fact, there is no manufacturer in India who is capable of supplying 4G equipments to BSNL. BSNL is not a small company operating in 1 or 2 states. It is from Kashmir to Kanyakumari, having a very big network, and no Indian, that is a fact. So now what Modi government has told BSNL, you roll out 4G network through a system integrator. It will be very difficult for general public to understand all these terms. So I will tell. What is a system integrator? That means one company will come. That company will procure hardware from some company. It will procure software from some company. It will procure other components from some other companies, and it will assemble. Assembling. That company, that organization is called a system integrator. Maybe some equipments may be procured from Indian companies, some equipments may be procured from foreign companies, but fact remains, whether it is Jio, whether it is Airtel, whether it is Vodafone, they don't follow this system integrator model. They enter into some vendor. It is Nokia or Ericsson. They sign agreement with one single company. That single company will come, they will install the equipments, and thereafter this equipments, this network will be maintained by that company. This network will be maintained by that company. This is called turnkey contract. All the private companies are procuring their equipments from a single vendor. Now Narendra Modi is telling BSNL to do monkey business. Monkey business. Take something from there, take something from here, assemble it. Comrade, the ultimate aim of Narendra Modi government is to convert BSNL into a sick company. That is the reason. Initially, they did not allot 4G spectrum. Through our struggles, we forced the government to supply 4G spectrum. Now, they have hatched a conspiracy. What is the conspiracy? Not allow BSNL to procure 4G equipment. And without procuring, nowadays, if we go to a customer asks, are you providing 4G? Our poor people, marketing people telling, no sir, we provide 2G, we provide 3G. Arey chalo yaar. This is a condition. So we are not able to satisfy the requirements of the general public. This is exactly what Narendra Modi government wants. Let the people get angry with BSNL. So this conspiracy is to see that BSNL becomes a sick company. Comrade Narendra was telling about the assets. I want to tell you, BSNL is having huge assets. The optic fiber network of BSNL comes to 7.5 lakh route kilometers. BSNL is having optic fiber network and its length is 7.5 lakh route kilometers. What is the length of optic fiber of Reliance? It is around 3 lakh only, around 3 lakh, not even 50% of the size of BSNL's network. This is the asset strength of BSNL, and BSNL is having vast tracts of vacant lands in all the cities, in the heart of the cities, whether it is Kolkata, Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore. In the heart of the city, we are having vast tracts of vacant land, and the value of these lands alone comes to lakhs of crores of rupees. Modi government, after making BSNL a scrap, a sick company, they are going to hand over this optic fiber network, these vast tracts of vacant lands, our 70,000 mobile towers, everything will be taken over by Mukesh Ambani. Mukesh Ambani will take over BSNL, and exactly this is what Narendra Modi is facilitating now. And we are telling the people, this is a COVID-19 pandemic situation.
We are not, yes, we are reaching out to the people, but we are not able to reach out to the people as much as we like. But we have to tell the people, convince the people that the existence of BSNL as a dynamic, vibrant public sector company is very much necessary to serve the people of this country in the interest of the people of this country. And we are hope to do. Yes, November 26th general strike, we will make it a grand success in BSNL, and this is not the end. And thereafter also, we will continue to fight and will continue to go to the people, and we will expose the Narendra Modi government. And I assure that the trade union movement of BSNL will protect BSNL as a 100% public sector company. With these words, I thank you, the organizers, for giving me this opportunity. Thank you, comrades. Thank you so much, Comrade P.Abhimanyu, for letting us know and even emphasizing why people, masses of our country. Comrade, your speech I'm not getting. No. Okay. So now, Comrade, okay. No. Hello? Yes. Can you hear me, Comrade? Comrades, can you? Am I audible? Yes. Comrade, you are audible to me. Okay. So yes, I thank you, Comrade P.Abhimanyu, for letting us know, or even to our viewers, why public sector is important and how specifically BSNL has been made by the government to fail and make it to a sick company, even if it has a capacity to cater to the masses. So today I thank everyone, Comrade Lalit Mishra, Comrade T.Narendra now, Comrade P.Abhimanyu, and Comrade S.N. Banerjee on speaking on PSUs और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में. और मैं उम्मीद करती हूँ जो भी हमें सुन रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें. ये जो फेसबुक पेज है जनरल स्ट्राइक के बारे में, डिमांड्स के बारे में, और आम जनता तक इसको लेकर जाएं. इसी उम्मीद के साथ मैं सारे पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको भी धन्यवाद करती हूँ. और आपको मैं इत्तला करना चाहती हूँ कि कल जो हमारा पैनल सेशन होगा वो रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर होगा. और आप सब लोग कल भी हमारे साथ 6 बजे बने रहें सोशल मीडिया के थ्रू. शुक्रिया आपका बहुत बहुत. इनकलाब जिंदाबाद. थैंक यू कॉमरेड्स. थैंक यू एवरीवन.